Assalamu alaikum. Good afternoon viewers. Welcome to SAK channel. First of all मैं शुक्रिया अदा करूँगा. I'm thankful to you guys कि आप लोगों ने मेरा जो चैनल था उसको पसंद किया, देखा वीडियो को, और कुछ ने सब्सक्राइब भी किया और लोगों ने उसको व्यू किया. इट्स गुड साइन. जो आज की वीडियो है जो हम स्टार्ट करना जा रहे हैं, इसके बारे में मैं ये चाहूँगा कि आप लोग न सिर्फ इस वीडियो को देखें और आगे चले जाएं, इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक सिर्फ कर दें, ये भी सफिशिएंट नहीं होगा. मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ, क्योंकि हमने एक ये बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करना शुरू की है आप सबके फ़ायदे के लिए, पर्टिकुलरली यंगस्टर के लिए. तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है, दैट्स गुड, राइट योर कमेंट्स. और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर आप उसके बारे में लिखेंगे. I will be very thankful to those particularly, they will write the negative views also about these videos. So let's start our second video today, guys. That is actually about the growth with career goals. Normally, most of the people in society, we know that a kid, एक बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ कैसे होती है. ये कैरियर 18 या 20 साल या 25 साल की उम्र में शुरू नहीं होता. कैरियर एक्चुअली शुरू होता है लैप ऑफ मदर से. एक माँ की जो गोद होती है वहां से बच्चे की ग्रोथ शुरू होती है. वो बच्चा वहां से सीखना शुरू कर देता है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग शुरू हो जाती है. माँ बच्चे को जब स्कूल में पहुंचाती है तो एक और बच्चे को साथ दोस्त मिल जाता है जो कि उसको गाइड करता है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में उसको हेल्प करता है. उसे टीचर कहते हैं. अब यहां आके एक इशू है कि मोस्ट ऑफ अस इन द रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली मैं खुद एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं, हम ये समझते हैं कि जब बच्चे को स्कूल में दाखिल करा दिया तब उस्ताद की जिम्मेदारी हो गई. नहीं, ऐसा नहीं है. वी नीड टू अंडरस्टैंड. Now you have to work with a team like a teacher and parents. And this bridge is very, very important in the growth of a child. And later it will help also in his career. So, the parents and teacher, they should have a close bond with each other. How my son is studying, how my daughter is studying, what is the feedback. The teacher should write the feedback to parents, and then parents should visit. उनको स्कूल में जाना चाहिए, बात करनी चाहिए टीचर्स के साथ. और मैं अप्रिशिएट करूंगा उन टीचर्स को. मैं मानता हूं कि आपके स्कूल्स में कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनमें कि इंग्लिश कंपलसरी है और आप लोग पेरेंट्स के साथ भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं. इट हैपन विद मी आल्सो इन पास्ट व्हेन आई वेंट इन वन स्कूल. तो कोशिश ये कीजिए प्लीज कि जो वालिदैन आते हैं आपके पास, ठीक है उनका बच्चा एक बहुत हाई लेवल स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन लाजम नहीं है कि उनके जो वालिदैन हैं वो भी उस लेवल पे उनकी इंग्लिश हो. तो आप उनके साथ जो कन्वीनियंट लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में बात करें. ये भी हेल्प करेगा बच्चे की उसकी ग्रोथ में, बच्चे की कैरियर ग्रोथ में. तो ये तो बेसिक कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि पहली लैप ऑफ मदर, सेकेंड टीचर, एंड द थर्ड पार्ट इज सोसाइटी. Society is also playing a big role in the growth of a child. And why I'm saying growth always? Because growth is linked with the career. Now, when all three steps are clear, ye तीनों step clear, and the third part which I was discussing with you guys, that was about society. Of course, society is helping the student also, the child also to grow. Now, going towards the goals, who will set goal for your child? Oh, this is very interesting. Always you need to talk to the child. आपको बात करनी चाहिए बच्चे के साथ. आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, आप उनका माइंड पढ़ें, बच्चे से पूछें, वो आपको बताएगा कि मैं बड़ा होके पायलट बनना चाहता हूँ. ओके, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ. ओके, जो बच्चा आपको बताता है, फिर आपने क्या करना है, आपने बच्चे की फिर जो स्टडी है उसका जो लेवल है उसको रीड करना है. और मैं आपको इस चीज की तरफ लेके जाऊंगा कि जो बच्चा आपको बता रहा है कि आई वांट टू गो इन दैट फील्ड,
آپ کو ہیلپ کرنی چاہیے بچے کو کہ وہ اسی فیلڈ میں جائے، کیونکہ اس فیلڈ میں جو کہ آلریڈی اس کا مائنڈ ایکسپٹ کر چکا ہے، وہ فیلڈ جو ہے اس میں آگے چلنے کے لیے، آگے جانے کے لیے اس کو آسانی ہوگی. یہ تو ہو گیا، آپ نے والدین نے بچے سے بار بار پوچھنا ہے. اب آگے چل کے دیکھیں کہ صرف والدین ہی نہیں ہے، اب جو دوسرا لنک ہے، برج ہے، وہ کون ہے؟ ٹیچر. نو اٹس اے ریسپانسبلٹی آف دا ٹیچر آلسو. یہ ٹیچر کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے بار بار پوچھے. وائی؟ وہ کیوں پوچھے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور یہ بڑی ہیلپ فل ہے. ایک ٹیچر جب ایک پوچھتا ہے کلاس میں کہ بھائی آپ کیا بنیں گے؟ میں پائلٹ بنوں گا سر. فائن. آپ کیا بنیں گے؟ میں ڈاکٹر بنوں گا. آپ کیا بنیں گے؟ میں انجینئر بنوں گا. تو اس میں ایک سینس آف کمپٹیشن آ جاتا ہے. کلاس میں بھی ایک سینس آف کمپٹیشن ہوتا ہے. پھر اس سے بھی اس بچے کو گرو کرنے میں مدد ملتی ہے. آگے چلتے ہیں. جب ہم اب یہ نہیں ہوتا کہ ہر بچے نے اپنے کیریئر کی جو گولز ہیں وہ اچیو کر لیے. جب کیریئر گولز کی طرف بچہ چلتا ہے، اس نے کیریئر سیٹ کر دیا ہے، کیریئر سیٹ کرنے کے بعد پھر اس کی ڈائریکشن صحیح ہو. یہ کس نے چیک رکھنا ہے بچے پہ؟ والدین اور ٹیچرز نے. بچے کا جب ڈائریکشن صحیح ہے، اب فائنلی کیا ہوگا؟ وہ اپنے گول کی طرف چل پڑے گا اور وہ سونر اور لیٹر ہی کین ریچ دیئر. اب ہوتا یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب بچہ کوئی فیل ہو جاتا ہے، وہ اپنے کیریئر کی طرف جا رہا ہے، وہ فیل ہو گیا ہے. اب فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے اس کو گیو اپ کر دینا چاہیے. نہیں، اس کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ ٹائم ہے جب بچے کو ہماری ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ پیرنٹس کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے اور گڈ فرینڈز کی ضرورت ہے جو کہ اس کو لفٹ اپ کریں. لیکن انفارچونیٹلی موسٹلی کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب کوئی بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ تو اینیمی بن جاتا ہے فیملی کا بھی. لوگ اس سے بات کرنے تک پسند نہیں کرتے. لوگ اس کو ڈسکریس کرتے ہیں کہ بھائی تیرے اوپر اتنے پیسے لگے، یہ ہوا وہ ہوا، تو فیل ہو گیا. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ کیوں فیل ہوا؟ اس کی ریزن کیا تھی؟ اگر آپ اس کے ساتھ تھے، ایک برج بنا ہوا تھا ٹیچر اور پیرنٹس کا، تو پھر تو آپ کو اس کی پتہ چل جائے گی کہ ریزن کیا ہے، وہ کیوں فیل ہوا ہے. فیلئرز میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. وہ سٹڈی صحیح نہ کر سکا، اس میں وہ تو آپ کی نظر اس پہ تھی، آپ دیکھ سکتے تھے، آپ اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے تھے. سٹڈی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مائٹ بھی جب کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایگزام میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے وہ کر نہیں پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جتنی ان کی تیاری ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے. تو ریزن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ والدین نے کرنا ہے، ٹیچرز نے کرنا ہے، اچھے دوستوں نے کرنا ہے. جب ریزن آئیڈینٹیفائی ہو گئی تو پھر اس کو سالو کرنا ہے. سالو کرنے کے بعد کیا ہو گیا کہ اس کا کیا ہوا کہ آپ نے فیلئر کو پازیٹیو میں لیا. لیکن دوسرے ہینڈ پہ ادر سائڈ آف دا پکچر، اگر اب بچہ فیل ہو گیا اور سب نے اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا، والدین نے، حتیٰ کہ ٹیچرز نے بھی، تو کیا ہوگا کہ وہ بچہ کیریئر گول تو بہت دور کی بات ہے، وہ بچہ مائٹ بھی اسٹڈی بھی کنٹینیو نہیں کر سکے گا. اور دس واٹ از ہیپننگ ایکچولی ان موسٹ آف دا سوسائٹیز. So the career building actually that need a positive motivation, and motivation is not only the job of the parents, not only the job of the teacher, not only the job of good friends. Motivation is also self motivation. We should teach, we should educate our children that self motivation is also important. You can do this thing. Try to take this, no, I can't do, it's difficult for me. Try to take out these things out from the mind of your child. Now by this way, if you will take out negativity out from their mind and you will try to put positivity in their mind, you can do, you have to do, and always motivate them towards the hard work. Because most of the parents also, they like that, okay, fine, I am a manager, I am a owner of the company, and my son should not cry, my son should not do the hard work, he should just come and occupy my space. No, that's not the right idea. From my side, the idea is our children, our young generation, we should motivate them towards the hard work. Hard work is very important, because if they will do hard work themselves and then they will reach on their goal, وہ ان کے لیے اور ہی فروٹفل ہوگا، فائدے مند ہوگا، benefited for them, they will be satisfied.
they will be more positive, and then they will also motivate other people also, that they can also help each other to create a positive society at the end of the day. Now, moving in this situation, guys, moving on, we discussed some basics that how we can help our young generation, our kids, to set their goal and how to move towards the goal with a positive way. Now, in current situation, I will come back. In current situation, in COVID-19 is really destroy everybody's life. A big impact on our life. हमारी जिंदगियों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है कोविड-19 के बाद. कोविड-19 से पहले और कोविड-19 से बाद बहुत बड़ा फर्क पड़ गया हमारी लाइफ पे. इस सूरत हाल में हमने करना क्या है? अपने कैरियर गोल्स के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए. आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूं कि इस सूरत हाल में कैरियर गोल्स और दीज थिंग्स, मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें हैं जो कि लोग आप उसको भूल चुके हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, लाइक एन इमरजेंसी सिचुएशन. और इमरजेंसी सिचुएशन में तो लाइफ बचाना जरूरी होता है, लेकिन लाइफ के साथ हमारे कैरियर जो हैं वो लिंक्स हैं, उनकी लिंक है, वो लिंक्ड हैं. हमने करना क्या है इस सिचुएशन में? हमने मोर फोकस रहना है. हमने ट्राई करनी है कि हम अपनी एनर्जी को मोर रेस्टोर करें. हमने मोर हार्ड वर्क करना है. फिर जाके इस सिचुएशन में हम कोप अप कर पाएंगे और हम अपने आप को संभाल पाएंगे. उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हम सेफ रहें और हम सिक्योर रहें. जो हमारा बेसिक, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड गाइस. अगर हमारा मुल्क सेफ है, सिक्योर है, हमारा मुआशरा, हमारा सोसाइटी सेफ है और सिक्योर है, then we can build a positive nation, a positive society, safe society. That is actually our priority. Now in this situation, being on job is very important. I know that I discussed in my previous video also that people, they are educated in our society, in our areas. They are graduate, postgraduates. They would like to sit on the chair to manage, to be a manager. I can understand their ambition, their goals. I agreed with them. But in this situation, guys, your families, your country, your society need you to do something. And as I suggested, even you are a 10 class, grade 10 pass, you are 12 or 14, I will suggest you, if you are not getting any opportunity in your country, let us start this after this COVID-19, when the recruitments and everything will start. I'm really looking towards you guys. You should start your career. No need to jump up. If you are not getting opportunity, as I told you, start with security and safety. And now guys, only I will clarify these two words and then I will finish this video because it's too long already. Safety and security. Safety mean protection and security mean prevention. Safety, you are saving your life and you are saving the life of others. Security, you are keeping the all dangerous, all negatives away from your society. So this is safety and security. And you should adopt this career. Start this. In this field also you have lot of opportunities to grow. And let's suppose, for example, you are working hard in your company, you didn't get more opportunities, no need to worry about. The field is open. You are in UAE, Dubai. The field is open, the market is open. You have more opportunities to go around. So just be focused. As I told you, keep your target in your eyes. Be focused, keep your direction right towards the target. Work hard. I can assure you that sooner or later we can achieve our goal. So this was the video guys. आज की ये वीडियो थी. इसमें मैंने कोशिश की कि मैं आपको
बेसिक्स बता सकूं, पहले कि कैरियर सेट होता कैसे है, गोल सेट होता कैसे है, फिर उस पर हम कैसे चलते हैं स्लोली एंड स्टडीली। और आजकल की सूरत हाल में कोविड-19 में मैंने सिर्फ टच किया है इसको कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो प्लीज़ इसको वीडियो को जब आप देखेंगे तो सब्सक्राइब का मकसद मेरा तो सिर्फ ये है कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो जब भी मैं कोई नहीं बनाऊंगा तो वो इजीली आप तक पहुंच जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगी। तो जब आप उसको रीड करेंगे तो डेफिनेटली कुछ लोग उसको लाइक करेंगे, कुछ डिसलाइक करेंगे। तो आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू गाइस विल पोस्ट योर कमेंट्स, राइट योर कमेंट, अपने कमेंट लिखें, मुझे बताएं कि ये यूजफुल है नहीं है, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। रियली आई नीड योर हेल्प आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस and take care of yourself and your family.